बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी लास्ट डिस्कशन इस पॉइंट पर एंड की थी कि किस तरीके से एक स्टार फॉर्म होता है और उसकी डेथ होती है। हमने एक मीडियम या लो मास स्टार की डेथ का प्रोसीजर फॉलो किया था कि उसका जो एंड होता है वो किस तरह से अकर होता है। तो हमें अंदाजा हुआ था कि भाई द प्रोसेस स्टार्ट्स विद हाइड्रोजन्स बीइंग रन आउट ऑफ द स्टार, उसका कोर जो है वो हेवियर एलिमेंट्स बनाना शुरू कर देता है, जिससे और हीट निकलती है और वो सरफेस के हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के या उसको फ्यूज करा के हीलियम बनाती है। सरफेस का हाइड्रोजन जब हीलियम बनना शुरू होता है तो उससे निकलने वाली हीट ऊपर की सतह की गैसेस को यानी सरफेस गैसेस को एक्सपैंड करवाती है। जब ये सरफेस गैसेस एक्सपैंड करती हैं तो आपके स्टार का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, कोर डेंसिटी में बढ़ता चला जा रहा है, वहां का रिएक्शन और वहां की ग्रेविटी उस कोर को मजीद पुल करके उसको डेंस से डेंस कर रही है और सरफेस की जो गैसेस है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है। लेकिन एक्सपेंशन की वजह से जरा कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। जब गैस एक्सपैंड करती है तो गैस कूल होती है। तो ये जो अभी छोटा था स्टार, जब वो एक्सपेंशन की वजह से बड़ा हुआ तो उसका टेम्परेचर पहले से कम हो गया, इसीलिए वो एक रेड जायंट बन गया। पॉइंट एक ऐसा आता है कि अंदर कोर का टेम्परेचर और हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है कि वहां से निकलने वाला एक्सप्लोजन एक तरह से आपके इस तमाम आउटर एटमॉस्फेयर को, इस स्टार के इस तमाम गैसेस को एक्सपेल कर देता है बाहर की तरफ, और जो रिमेन्स होते हैं उसको आप कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। इस प्लैनेटरी नेबुला के सेंटर में आपके पास आपके स्टार का कोर बचता है जो कि एक व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। इस व्हाइट ड्वार्फ में मेनली आपके पास हेवियर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और एक फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये कलर में व्हाइट होता है। लेकिन ये हेवियर एलिमेंट्स एक पॉइंट ऐसा आता है कि मजीद फ्यूज नहीं हो पा रहे होते, तो आपके फ्यूजन रिएक्शंस खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जब फ्यूजन रिएक्शंस खत्म होना शुरू होते हैं तो टेम्परेचर्स गिरते हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में कम होके और हीट में यानी कलर में डिम होते होते एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। इस ब्लैक ड्वार्फ के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट्स आपके पास हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आयरन और इस तरह के जो है वो कह लो कि सोडियम वगैरह ये एग्जिस्ट करते हैं, जो कि दूसरे कार्बन वगैरह जो कि दूसरे चीजों से फॉर्म होके प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करेंगे भाई व्हाट इफ वी हैड अ हाई मास स्टार लाइक सीरियस। हाई मास स्टार्स वो होते थे जिनका मास आपके सन के मुकाबले में 8 टाइम्स ज्यादा हुआ था या प्लस चलता था। तो जब इसके अंदर आपके पास कहने कि ये वाला मामला होता है और इसका हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम होना शुरू होता है, तो पहली बात तो ये कि भाई इस स्टार में ये जो हाइड्रोजन की कंजम्पशन है ये मीडियम या स्मॉल साइज स्टार से ज्यादा तेज होती है। उसका एक कुछ बहुत सिंपल से रीजन है, और वो रीजन ये है कि भाई हाई मास स्टार्स के अंदर होने वाला जो कह लो कि फ्यूजन रिएक्शन है और जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, तो बहुत तेजी से उसका हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा होता है। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मीडियम साइज स्टार से छोटा होता है कंपैरेटिवली। ये उतने अरसे जिंदा नहीं रह पाते जितना अरसे एक मीडियम साइज स्टार आपके पास अलाइव रहता है। तो आपके पास इस स्टार के अंदर होने वाला रिएक्शन बहुत तेज होता है, और क्योंकि इसका मास भी बहुत ज्यादा होता है तो जो इसका कलर होता है वो जनरली आपके पास जो है वो कह लें कि ब्लूइश और व्हाइटिश शेड्स में जा रहा होता है। See, it's way more hotter than our sun because of high rate of fusion reaction that goes on. जब इसके अंदर हाइड्रोजन्स रन आउट होना शुरू होते हैं और इसका कोर कोलैप्स होता है तो it turns into a red supergiant. See, रेड जाइंट से बड़ा होता है, ये रेड सुपर जाइंट। सुपर जाइंट होने की वजह ये है कि भाई क्योंकि इट वाज कंप्राइजिंग ऑफ मोर मास, तो जब वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ, लाजिम बात है वही रीजन था, सरफेस का हाइड्रोजन रिएक्शन की वजह से हीलियम बन रहा था। हीट सरफेस के हीलियम को उसके गैस में एक्सपैंड करवा रही थी, तो एक्सपेंशन की वजह से स्टार का वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो मास क्योंकि ज्यादा था तो एक्सपेंशन की वजह से जो साइज क्रिएट हुआ वो एक रेड जायंट से भी ज्यादा था, तो हम उसको रेड सुपर जायंट बोलते हैं। इसके कोर के अंदर मामला वैसे ही चल रहे होते हैं। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो चल रहा होता है उसकी वजह से
जैसे पहले हाइड्रोजन से हीलियम बन रहे थे, अब हीलियम फ्यूज हो के आपके पास कार्बन के अंदर, और कार्बन फ्यूज हो के आपके पास ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एलिमेंटली आपके पास आयरन बनता है। इसमें भी बिल्कुल पहले की तरह एक्सप्लोजन होता है जैसे रेड जायंट में हुआ था, कि जब टेम्परेचर्स बहुत हाई हो जाते हैं तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो पूरे आउटर एटमॉस्फेयर को स्टार के स्पेस के अंदर एक्सपेल कर देती है। इसमें वो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसका एक्सप्लोजन क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा था तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कह लो कि इंटेंसिटी का होता है, जिसको आप एक सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक, दिस इज व्हेन योर स्टार एक्चुअली स्टॉप्स ऑल इट्स फ्यूजन रिएक्शन। उस वक्त आपके पास वहां पे एक आयरन की कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि योर आयरन कैन नॉट फ्यूज इनटू अ हायर एलिमेंट बाय अ मेयर फ्यूजन, क्योंकि आयरन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जब वो एक फ्यूजन रिएक्शन स्टार पे एंड होता है तो एक सुपरनोवा की फॉर्म में एक्सप्लोजन होती है। वो एक्सप्लोजन तुम्हारे आउटर एटमॉस्फेयर को पूरी तरह स्पेस में एक्सपेल कर देती है। लेकिन इस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है सुपरनोवा में वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। उसका ग्लो, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी होती है। इतनी हाई अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी होती है कि अक्सर इससे निकलने वाली एनर्जी को आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हो। ये डिफरेंट स्टार्स की ल्यूमिनोसिटी को, यानी उसकी चमक को कंपेयर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी एनर्जी इतनी हाई होती कि भाई ये स्टार इसके मुकाबले में कितना डिम है। सुपरनोवा एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा थी, और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट इस कदर होती है कि ये आयरन जैसे एटम्स को भी दूसरे एलिमेंट के साथ फ्यूज करवा के आयरन से बड़े एलिमेंट्स प्रोड्यूस करवाते हैं। आयरन से ज्यादा हेवियर एलिमेंट्स इस सुपरनोवा के दौरान प्रोड्यूस, जो कि आपके इस एक्सप्लोजन की वजह से आउटर स्पेस में ड्रिफ्ट होके दूर दूर चले जाते हैं और नेब्यूलास बन जाते हैं। मतलब ये क्लाउड और क्लस्टर्स ऑफ गैसेस जो निकलते हैं ये नेब्यूला बन जाते हैं आपके पास, जो कि बाद में दोबारा प्लैनेट्स या स्टार्स बनने की वजह बनते हैं। सुपरनोवा के एंड पे आपको दो रास्ते मिलते हैं। The end of a huge star after a supernova is either a neutron star or a black hole. न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का बनना अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो रेड सुपर जायंट था या ये जो आपका मैसिव स्टार था, हाई मैसिव स्टार, ये कितना ज्यादा मास रखता था। अगर आपके पास इसका मास थोड़ा कंपैरेटिवली कम था, कम इतना भी नहीं कि वो मैसिव वाली कैटेगरी से बाहर आ जाए, अगर कम था तो इट टर्न्स इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार में मेजरली न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, और ये स्टार जनरली ये कुछ ऐसा होता है कि ये स्पिन कर रहा होता है। सही, ये स्पिन करता है और पल्सार की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पल्सार्स आर बेसिकली स्पिनिंग स्टार्स। इसमें से रेडियो वेव्स वगैरह इमिट हो रही होती हैं आपके पास। और अगर ये रेड सुपर जायंट बहुत बड़ा था, मतलब मैसिव स्टार्स में भी एक हायर डिग्री का मैसिव स्टार था, तो उसका कोर इतना डेंस होता है कि इट टर्न्स इनटू अ ब्लैक होल। जहां पे डेंसिटी ऑफ मैटर इस कदर ज्यादा होती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड उस जगह की हर एक चीज को रोक देती है। तो अगर मैसिव स्टार थोड़ा छोटा है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार प्रोड्यूस होगा जिसमें न्यूट्रॉन्स अच्छे खासे होते हैं और हायर हैवियर एलिमेंट्स भी मिलते हैं आपको। इसमें आपके पास न्यूट्रॉन्स के अलावा कुछ हैवियर एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्टार स्पिन कर रहा होता है
और इसमें से कह लो कि पल्स निकल रही होती है रेडियो वेव्स की, जिसकी वजह से इसको पल्सार्स भी कहा जाता है। और ये रेडियो वेव्स आके आउटर स्पेस में फैल रही होती है। और सुपरनोवा इज स्टिल अ क्लाउड ऑफ गैस मेरे बच्चे। It doesn't have any meteoroids or anything. और अगर रेड जाइंट यानी आपका मैसिव स्टार हायर डिग्री का मैसिव स्टार था, तो जब वो डाई होता है सुपरनोवा से, तो वहां पर ब्लैक होल बन जाता है। तो मैंने जो चीज यहाँ पे बताई, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस ओवर हियर। मैंने स्मॉल स्टार की डेथ को लिख दिया था यहाँ पे। न्यूट्रॉन स्टार्स की, हाँ, उनकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड काफी स्ट्रांग होती है, तो अगर उनके नजदीक से कोई चीज पास होगी तो वो उस पर इफेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन दे डोंट एक्चुअली अफेक्ट द ब्लैक होल। ब्लैक होल की आपके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है, मतलब उनका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। Why neutron stars spin? हंसला मेरे बच्चे, इस चीज का ताल्लुक असल में आपके कोर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब आपके स्टार का कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, यानी रेड सुपर जायंट बनने पे जब उसका कोर बहुत ज्यादा डेंस होता है और मास अंदर की तरफ पुल इन हो रहा होता है ना, तो वो स्ट्रेट पुल इन नहीं हो रहा होता, एक तरह से कह लो वो थोड़ा सा एंगुलरली पुल इन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास ये स्पिन करना शुरू हो जाता है। और लाजिम बात है, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होती है तो जो कोर निकलता है वो स्पिन होता हुआ कोर निकलता है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंस और बहुत छोटा होता है तो काफी हाई स्पीड पे स्पिनिंग चल रही होती है। तो ये स्पिनिंग रेट बहुत बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये बहुत स्लो नहीं घूम रहा होता, इट्स मूविंग रियली रैपिडली, मतलब थाउजेंड्स ऑफ आरपीएम पर सेकंड पे अगर आप बोलो, 1000 रेवोल्यूशंस, मतलब थाउजेंड्स ऑफ रेवोल्यूशंस, 20-30,000 रेवोल्यूशंस पर सेकंड से वो रोटेट करता है। ब्लैक होल्स आर टेक्निकली देयर फॉरएवर, फॉरएवर इन द सेंस ब्लैक होल के मुताबिक भी अब ये कहा जाता है कि भाई कह लो कि जैसे स्टीफन हॉकिंग ने निकाला था हॉकिंग रेडिएशंस, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ब्लैक होल्स डू इवेपोरेट। और जहां तक न्यूट्रॉन स्टार का ताल्लुक है, न्यूट्रॉन स्टार्स डू डाई एज वेल, सही, एंड द पॉइंट इज के टेक्निकली न्यूट्रॉन स्टार के बारे में तो एक और चीज ये भी होती है कि भाई इसमें तो फ्यूजन रिएक्शन ही एंड हो चुका होता है, there's kind of like no fusion reaction going on over there, बस इसमें तो जो अमाउंट ऑफ हीट थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है एंड इट बिकम्स अ डोमिनेंट पीस ऑफ मास ओवर देयर इन आउटर स्पेस। क्योंकि इसका जो कोर है ना, एक न्यूट्रॉन स्टार वाज बेसिकली अ कोर ऑफ अ रेड जायंट, तो इसके अंदर आपके पास हेवियर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यूजुअली आयरन मौजूद होता है इसके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो खत्म हुआ उसका मतलब ये था कि भाई देयर इज नो मोर न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल, एंड आयरन इज एक्चुअली द एंड ऑफ फ्यूजन।
नॉर्मल फ्यूजन जो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे होते हैं अराउंड, उसमें आयरन इज द लास्ट एलिमेंट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ। तो जो सुपरनोवा के बाद रिमेनिंग कोर बचा था जिसमें फ्यूजन नहीं हो पा रहा था, दैट्स अ न्यूट्रॉन स्टार, और उसमें से सिर्फ हीट निकल रही हो, दे डोंट एक्चुअली ग्लो। जी मेरे बच्चे, हॉकिंग रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट यहीं पे आया है। ये इवेपोरेट होते होते बहुत टाइम बाद जाके खत्म हो गया। ठीक है, मैं इसके आंसर को यहाँ पे कोट कर देता हूँ। It's basically depth of a high mass star. They have masses more than 8 times that of the sun. Fusion reaction in them go at a higher rate, and soon they start to run out of hydrogen. When the hydrogen decreases, helium starts to fuse and form heavier elements like carbon, etc. Heat produced causes surface hydrogen to fuse as well, and expand. The core collapses further due to extra gravitational force. The star turns into a red supergiant. It has a larger size due to larger mass. Eventually, when elements fuse and start producing iron, fusion reactions end in the form of a huge explosion
called a supernova. Supernova is one of the brightest events that happen in your night sky. The energy and light produced is very high, such that even iron fuse to form heavier elements. Which expel in outer space. As clouds or nebula. If red supergiant was small, neutron star is formed. That has no fusion reaction going on inside of it. But a large amount of heat is being radiated. That is what it was, the core of the star. It contains heavier elements and spins at extremely high rate. Generating radio wave pulses which surround it. It doesn't glow. सही, क्योंकि उसमें से कोई फ्यूजन रिएक्शन नहीं चल रहा, तो उसमें से ग्लो नहीं हो रहा होता है. And if the red supergiant was large, the extremely dense core of it turns into a black hole. Not even light can escape out of it. And we also know that a neutron star would eventually stop radiating heat and it would come to a stop. Sab hoga usme. It will be just nothing but a mere remnant of your kya star, cold remnant of your star, which was once a glowing body. Yeah, that's how your star dies. Sad life.
अच्छा भाई, now we have a last thing, that's basically our expanding universe. The universe is expanding. Black hole, the Big Bang was actually considered as true, and there is a way of actually like proving it. There's something called a red shift. Now, what's a red shift? Let me like teach you. In order to understand red shift, in the color of stars, they're moving away from one another. In Big Bang would have occurred. What was a Big Bang? It's considered that the entire universe was in the form of a small pointed dot. So ये extremely dense point जिसमें बहुत सारा mass था universe का, and it exploded and we had a universe. So it all started from a point, and now वो point कहलाता है आपका event horizon. So ये जिसके पहले आप कोई time या कोई space या उसकी किसी भी चीज की आप understanding नहीं रखते. There was nothing before a Big Bang. अब how does a redshift actually prove, and what is a redshift? देखो redshift में समझने के लिए, if you remember the Vibgyor, let me like add this diagram over here. This Vibgyor of ours ना, ये असल में जिस order में लिखा गया है, this order is actually of decreasing wavelength. From violet to red, your wavelength decreases. Sorry, wavelength increases and frequency decreases. From violet to red. तो होता ये है कि when we were seeing a star, generally if a star is at its position, stationary, so light coming out of it will have a particular wave, and that wave will have its wavelength, and this is us observing it. तो जो wavelength होगी उसकी वो same होगी. If the source of light was stationary, then actual wavelength would be equal to observed wavelength. मतलब what's emitted is also what you see. जिस wavelength की wave emit हुई होगी वही wavelength आप देख भी रहे हो. But मेरे बच्चे, if a star begins to move away from you, if a star begins to move away from you, तो क्या होता है कि दूर जाने से the wavelength actually increases. See, wavelength increases. इसको आप imagine कर सकते हो इस तरीके से कि if there was a pool and you're producing water ripples in a pool,
पहली रिपल बनी वो इस तरह से फैल रही है, उसका सेंटर ये होगा। दूसरी रिपल भी अगर इसी सेंटर से बनती तो वो भी ऐसे ही स्प्रेड होती और गैप सेम होता। लेकिन होता ये है अक्सर कि अगर ये सोर्स बैक मूव कर रही होती, अगर ये लेफ्ट पे जा रही होती, तो अगला रिपल इधर बनता, उसका सेंटर कुछ और होता। दिस वुड हैव बीन इट्स सेंटर। कि अगर सोर्स पीछे चली जाती थोड़ी सी, उसका सेंटर कुछ और होता। और जो यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा है, उसको वेवलेंथ इंक्रीज होकर नजर आती, उसको फील होता कि यार इट्स अ लॉन्गर वेवलेंथ, सोर्स ने लंबी वेवलेंथ बनाई। हालांकि इट वाज नॉट अ लॉन्गर वेवलेंथ, सोर्स तो वैसे ही वेव प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन because it's moving away from the observer, so every wave it produces वो थोड़ी सी दूर बन रही है, slightly away। तो यहाँ पे होता ही है कि भाई एक्चुअल वेवलेंथ होती है छोटी और जो ऑब्जर्व हो रही होती है वो होती है ज्यादा। मतलब हमने जब स्टार्स को देखना शुरू किया तो कैलकुलेशंस के मुताबिक जो वेवलेंथ उसकी होनी चाहिए, मतलब डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, डिपेंडिंग ऑन इट्स सरफेस टेम्परेचर, हमें अंदाजा है कि भाई दिस शुड बी द वेवलेंथ। लेकिन जो ऑब्जर्व करते थे वो उससे बड़ी निकलती थी। और ये एक स्टार नहीं, तकरीबन हर स्टार के साथ था जो आपने अपने सराउंडिंग स्पेस में ऑब्जर्व किया। तो भाई इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड यू आर लुकिंग एवरीवेयर, like all the stars around you, if you're standing over here and you're looking at all the stars around you, left to right, every star that you see gave you the same effect. Every star had a slight amount of red shift in its color. मतलब रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द विवग्योर अगर कलर येलो होना चाहिए तो ऑरेंज हुआ हुआ है, ब्लू होना चाहिए था तो थोड़ा सा ग्रीन हुआ हुआ है। देयर वाज अ रेड शिफ्ट, colors were more towards the red side than towards their actual values. Every color had a slight red shift. तो वहां से आपको अंदाजा हुआ कि यार there's something wrong। और वो wrongness क्या थी भाई? The stars were moving away from us, the observed frequencies were different than the actual, बल्कि the observed frequencies were more than the actual। और इस phenomena को आप नाम देते हैं Doppler's effect। This thing is called the Doppler's effect। Doppler's effect के मुताबिक when your source starts to move, your wavelengths appear to be different than they actually are। When the source of a wave moves away from observer, the observed wavelength is longer, और इसी तरह से observed frequency is shorter than the actual। This difference in wavelength, या आप इसको frequency कह लें, क्योंकि wavelength change हो रही है तो frequency भी change हो रही है। V equals f lambda is called Doppler's effect। In case of stars, a red shift in their color was seen when observing via telescopes। This proved that
all stars are moving away and our universe is expanding. It also validates the idea that Big Bang would have occurred everything was concentrated at a point, and that point exploded, giving all in this universe an outward velocity. So this is a basic idea. थोड़ा बहुत हमने इसमें देखा कि how this universe actually goes about and किस तरह से बिग बैंग हुआ था. जहां तक आपको आपके यूनिवर्स का पता है कि भाई your size of the universe is like 1 million light years. So universe बोलो, it's the Milky Way which is 1 million light years. Universe का तो खैर edge कब तक अंदाजा ही नहीं है. बनाते हैं हम, लगाते हैं थोड़ा बहुत आइडिया. हमारी मिल्की वे इज अराउंड 1 million light years. मैं ये लिख देता हूँ कोट रिगार्डिंग द मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी थी. 1 million light years in dia. That's from edge to edge. And remember one more thing. The faster your galaxy is moving away from you, the greater would be the redshift. उसके कलर के शिफ्ट से आप उसकी स्पीड भी जज कर सकते हैं. If a star recedes away faster, it shows a greater redshift. उसके कलर में उतना ज्यादा redshift आएगा. Redshift and the speed are actually proportional, and it's not just with the stars only, but it can be applied with galaxies as well. बिग बैंग और रेड शिफ्ट में रिलेशन ये है कि रेड शिफ्ट के थ्रू इस बात का अंदाजा हुआ था कि गैलेक्सीज एंड स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम यू. And if everything is moving away from you and from one another, this means they must have been together at some time, and an explosion would have caused them to move away. This means a big bang was actually a valid phenomena. It would have happened. Okay, everything started from a small point of kind of like infinite density, and now everything is spreading out of it.
ठीक है, दैट्स इट फॉर योर स्पेस फिजिक्स। थियरी की कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ भी चलेंगे। आई ट्राई टू फिल्टर आउट सम क्वेश्चंस और आपको करवाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, देयर इज नो लॉजिकल थ्योरी, इट्स जस्ट एन आइडिया। So multiverse might exist. ठीक है भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।